teach you lesson number 1, Neha'S alarm clock. Before that, we discussed wake up poem and we also discussed the question answer. This poem, wake up. Now, we are going to talk about Neha'S alarm clock. Okay, now I am going to read lesson number 1, Neha'S alarm clock. How many characters are there in this lesson? First one is narrator, second one is Neha, mother and birds. Okay, narrator. Ring, ring, ring. Off goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket, but she knows she has to get up. She mutters to herself. Here, the narrator tells about Neha's situation, what the Neha is doing early in the morning. Neha, ring, ring, ring. Narrator, what narrator is telling to Neha? Ring, ring, ring. Of course, the alarm clock at 6 in the morning. So, बेटे 6 बजे अलार्म ring, ring, ring बोल रहा है. Neha makes a face and covering her ears with her pillow. What she was doing? नेहा क्या कर रही है? अपना जो फेस है वो कवरिंग कर लेती है. किसके पीछे? पिलो के पीछे. जैसे कि आप सब बच्चे करते हैं. Snuggles under the warm blanket. अच्छा सा बड़ा सा ब्लैंकेट है, उसके अंदर नेहा छुप जाती है. क्यों? क्योंकि उसको जल्दी उठना नहीं है. But she knows she has to get up. She mutters to herself. पर उसको पता है कि उसको जल्दी उठना है. फिर भी अपने आप से वो मस्ती कर रही है. Neha, this alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It is so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. Now, Neha's turn. नेहा क्या बोलती है? This alarm, ये जो अलार्म क्लॉक है, वो 6 बजे हमेशा मुझे जगाता है. This alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. ये जो अलार्म क्लॉक है, वो 6 बजे हमेशा मुझे उठाता है. It is so unfair. ये अच्छा नहीं है. Why? Because she wants to sleep more and more early in the morning. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this alarm clock would forget its time job sometimes. ये नेहा ऐसा बोल रही है कि कभी-कभी या फिर ये अलार्म क्लॉक है, वो अपनी जो घड़ी बजाता है सुबह में, वो शायद भूल जाए तो कितना अच्छा होता है, मुझे ज़्यादा सोने का समय मिल जाए. नरेटर, something falls Neha's mind. अभी नरेटर क्या बोलता है कि कुछ गिर गया है और नेहा अच्छे से स्माइल करती है. नेहा, oh, my clock has fallen. How happy I am tomorrow. I can get up late. Okay. अभी वो जो गिर गया था वो क्या था? कुछ नहीं, वो अलार्म क्लॉक था. नाउ नेहा क्या बोल रही है कि अच्छा हुआ गिर गया, कल से मुझे वो परेशान तो नहीं करेगा उठने में. Narrator, next morning there is no alarm. Okay, so Neha sees and sees the small chirping birds. अभी क्या हो रहा है बच्चों? नरेटर ऐसा बोल रहे हैं. Next morning there is no alarm. Now next morning को नेहा को कोई परेशान करने वाला नहीं है. So Neha sleeps and sleeps. अभी नेहा सोएगी और सोएगी and sleeps and the small chirping birds. Okay, you can see two birds are here and
with a start. Neha, narrator, Neha gets up with a start. Neha, oh no, if it is not the alarm clock, it is these birds. Why don't they leave me alone? अभी अलार्म नहीं बज रहा है तो कौन मुझे परेशान कर रहा है? ये सब birds. तो नेहा क्या होगी? क्यों इन लोग मुझे छोड़ते नहीं हैं? क्यों मुझे सोने नहीं देते हैं? Narrator, even this wish of Neha's comes true. The next morning, there is not only no alarm clock, there are no birds either, but there is someone else who does not want to her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. अभी क्या हुआ है? अलार्म क्लॉक पे गुल उठ चुका है, मतलब गिर गया है तो बज नहीं रहा है। सेकेंड वन कौन था? बर्ड्स थे। अभी थर्ड कौन आया है? सन, ब्राइट सन। सो अभी क्या करें कि चलो नेहा तेरी जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी। But the next morning there is not only no alarm clock. There are no birds. Birds भी नहीं है, alarm clock भी नहीं है. But there is someone else. But someone is there. Okay. Who does not want her to miss the school bus? और कोई है जो नेहा की स्कूल बस को मिस करना नहीं चाहता है. Can you guess who it is? क्या आप लोग सोच सकते हैं वो कौन होगा? The big bright sun. कौन है? बड़ा सा big bright sun है. He fills Neha's room with a warm smile. नेहा की जो रूम है, जैसे कि आप सबकी रूम है, वो क्या करता है सन? अपनी warm smile देता है. Neha, oh my eyes, now is the sun waking me up. Why can't he let me be? अभी नेहा बोलती है my eyes, ऐसे करती है. Now is the sun. अभी कौन आ गया है उसको परेशान करने के लिए? सन आ गया है. Why can't he let me be? Narrator, even this wish of Neha's comes true. Next morning, the sun is behind the clouds, so Neha knows till she hears her mother's voice. Next morning में क्या होगा? जो sun है वो बादलों के पीछे चला जाता है. So Neha knows till she hears her mother's voice. अभी नेहा को किसकी आवाज सुनाई देगी? उसकी मम्मी की. Mother, wake up, sleepy head, you will miss the bus. What her mother is telling to Neha? Neha, जल्दी उठ जाओ, आपकी बस चली जाएगी बेटा. Okay. Neha, oh no. Why does mother have to wake up me up? अभी मेरी मम्मी मुझे क्यों उठाने के लिए आ गई? Narrator, there is no escape now. Neha gets up and gets ready. Can you imagine what happens the next day? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. अभी क्या हुआ बच्चों पता है? अभी कोई रीजन नहीं है. Neha gets up and gets ready. अभी नेहा जल्दी से उठ जाती है और जल्दी से रेडी हो जाती है for walk or the school. And then can you imagine? क्या आप सोच सकते हो what happened the next day? अगले दिन क्या होने वाला है? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. अभी 6 o'clock बजा है. She calls out to her mother. उसकी मम्मी को बुलाती है. Neha, Mom, who woke me up today? मुझे किसने
नेहा, आई फील हंग्री, मुझे क्या लगती है? भूख लगती है मम्मी। मदर, व्हाई डू यू स्लीप एट नाइट एवरी नाइट? तुम नेहा 9 बजे क्यों सो जाती हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाई डू यू स्लीप एट 9 o'clock? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी। क्यों? बिकॉज आई फील मम्मा स्लीपी। वेरी गुड मदर, देयर इज अ क्लॉक। क्या है? देयर इज अ क्लॉक inside you which tells you when to eat. So we all have, you and me and all of us have a one alarm clock inside. When to sleep, when to wake up, हमें क्या बताता है? कब हमें खाना है, कब हमें उठना है, कब हमें पढ़ाई करना है, कब हमें वॉकिंग करनी है। ओके नेहा, I better brush now. I don't want to miss the bus. अभी क्या बोलिए? मुझे जल्दी जल्दी जाना है और मुझे मेरी स्कूल की बस मिस करनी नहीं है। मदर, रिलैक्स, अभी शांत हो जाओ नेहा। Today is a